Good morning, everybody. Today we will discuss about the poem Where the Mind is Without Fear. This poem has been written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, he was a Bengali poet, he was a short story writer, song composer, playwright, essayist, and painter who introduced new prose and verse forms in poetry. So he was highly influential in introducing Indian culture to the West and the vice versa. He is generally regarded as outstanding creative artist of early 20th century India. In 1913, he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. This poem, Where the Mind is Without Fear, it is a pre-independent poem in which the poet sincerely urges to God to awake his fellow beings for the realization that the essential need to live in a free and united country. He wants his countrymen to awake and enjoy the life of full dignity and honor. This poem is an extract from Tagore's immortal, that is Gitanjali. ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये गीतांजलि से ली गई है. एंड हेयर द पोएट मेक्स अ प्रेयर टू गॉड. यहाँ पर जो गॉड है पोएट जो हैं वो गॉड से एक ही प्रेयर कर रहे हैं कि टू टर्न हिज कंट्री इनटू ए हेवन ऑफ फ्रीडम. ही just wants freedom for their countrymen, for his countrymen. He wants his country to be free from all evils. वो चाहते हैं कि उनका जो कंट्री है, देश है, वो हर तरह की बुराई से फ्री हो जाए. He wants it to be a country where there is no fear in the minds of people. वो नहीं चाहते कि लोगों के माइंड में किसी भी तरह का कोई डर जो है वो रहे. The lines of the poem are like where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. The poet prays to God to turn his country into heaven. It should be a heaven where his countrymen, they are fearless. They don't have any kind of fear. He wants them to be brave and courageous. वो चाहता है कि उसके जो countrymen हैं वो brave हों, courageous हों. They should not be able to hold their, they should be able, वो इतने capable होने चाहिए. They should be able to hold their heads high विद ऑनर, कि हमेशा सम्मान से उनका सिर जो है वो ऊंचा रहे, वो ऐसा चाहते हैं. दे शुड डू नथिंग दैट इज़ मीन और लो. वो नहीं चाहते कि उनके जो कंट्रीमैन हैं वो कोई भी ऐसा काम करें जो मीन हो या लो हो. द पोइट वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी अ प्लेस ऑफ वेयर द नॉलेज इज़ फ्री. वो चाहते हैं कि उनका देश ऐसा हो जहाँ पर नॉलेज जो है वो फ्री हो. It should be a place where people live in love and unity. They should not be divided by narrow thoughts of caste, creed or religion. People should be truthful, he wants. वो चाहते हैं कि लोग जो हैं दे शुड बी ट्रूथफुल, वो सच्चे हों. देयर वर्ड्स शुड स्प्रिंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ देयर हार्ट्स. उन्हें लगता है कि जो उनके शब्द जो देशवासियों के निकलें वो उनके हार्ट से निकलें, उनके मन से निकलें. इन शॉर्ट द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इविल्स. दे शुड बी आइडियल ह्यूमन बींग्स. इट इज़ सच अ हेवन दैट द पोएट वॉन्ट्स हिज कंट्री टू बी. Now, the next lines are where tireless striving stretches its arms towards perfection, where
The clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Again and again, the poet is praying to God to turn his country into a heaven of real freedom. He wants that his country should be free from any kind of dark things or any evils. किसी भी तरह की बुराई या बुरी चीज़ें जो हैं उसके देश में ना हो. It should be a symbol of perfection. वो चाहते हैं कि उनका जो देश है और देशवासी जो हैं, मतलब दे शुड रिप्रेजेंट परफेक्शन, वो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करें. All his country should walk tirelessly towards that perfection. They should be guided by reason alone. They should not follow any dogmas. किसी भी तरीके से वो डोगमास को जो हैं वो फॉलो ना करें, मतलब वो किसी भी तरह से अंधविश्वास को जो है फॉलो ना करें. They should not be led astray by dead habits or useful customs. जो बेकार के customs हैं, जो अंधविश्वास हैं, बेकार के जो रीति रिवाज हैं, वो उन्हें फॉलो ना करके इनफैक्ट उन्हें परफेक्शन की तरफ जो है वो उनके देशवासी चलें. वो इस तरह की प्रेयर जो है वो भगवान से कर रहे हैं. The poet wants his countrymen to be broad-minded. He wants that his countrymen, they should not have narrow mind. They should not be narrow-minded. छोटी सोच के लोग ना हों उसके देश में. उसके जो देशवासी हैं उनकी सोच जो है, सोच का दायरा जो है वो बड़ा हो, ऐसा वो प्रे कर रहे हैं. They should be genius in their thoughts and actions. Their thoughts and actions should go on widening forever and ever. They should not remain narrow in their thoughts or actions. The poet earnestly prays to God to light the path of his countrymen. He prays that his country should become a true heaven of freedom. वो बार बार यही चाहते हैं कि उसका जो देश है वो एक हेवन में बदल जाए, एंड दैट शुड बी द हेवन ऑफ फ्रीडम. उसे लगता है कि हेवन ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, उसके देश जो है वो हेवन ऑफ फ्रीडम में चेंज हो जाना चाहिए. सो दिस वॉज अ पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ